हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम यही क्लास रे कंप्यूटर को रिवीजन करवा। आपण यही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे। ओके, आरंभ करवा। देखंतु फर्स्ट पार्ट रे हम देखिबा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे केउ टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा जाउतला? वैक्यूम ट्यूब्स मन रखंतु। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे केउ टेक्नोलॉजी दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स रो टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा जाउतला। प्रश्न रहउची आपनकर। ओके, एवं एथिरे केउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्यवहार करा जाउतला? दैट इज मशीन लैंग्वेज। केउ लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज जहार बाइनरी कोड रहउची 0 एंड 1। देन एथिरे केउ स्टोरेज डिवाइस? मैग्नेटिक ड्रम्स को मन रखिबा। मैग्नेटिक ड्रम्स सिंपली मन रखंतु। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रो थ्री थिंग्स: टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टोरेज डिवाइस। कौन कौन? वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे एग्जांपल होची इनाक एंड यूनिवाक। इनाक होची आपनकर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड यूनिवाक होची फास्ट कमर्शियल कंप्यूटर। सिंपली आपनको एई चारि पांचटी पॉइंट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रो प्रश्न आसुची मन रखिबार अछि। नेक्स्ट जीवा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे केउ टेक्नोलॉजी यूज्ड? दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करा जाउथिला सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। एवं एथिरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थिला असेंबली लैंग्वेज। केउ लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज मन रखो। स्टोरेज डिवाइस कोन यूज करा जाउथिला? स्टोरेज डिवाइस स्टोर करिया पई मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप को व्यवहार करा जाउथिला। ओके, मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप को व्यवहार करा जाउथिला। एग्जांपल होची यारो आईबीएम रो सीरीज। आईबीएम सीरीज कंप्यूटर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रो कैटेगरी रे आसीबो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थर्ड जनरेशन रो कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे केउ टेक्नोलॉजी यूज्ड? दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन रे सेटा आपनकर तयारी आईसी। आईसी सर्किट को थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे इंट्रोड्यूस करा गला। एवं एथिरे फर्स्ट टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होला हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटेड लैंग्वेज को व्यवहार करा गला थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। देन एथिरे मैग्नेटिक डिस्क को यूज करा गला स्टोरेज डिवाइस भापरे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेलको। ओके, देन मन रखंतु फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर रो टेक्नोलॉजी यूज करा गला फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ता आपनकर गोटे VLSI अटे वेरी लार्ज स्केल रो इंटीग्रेशन को यूज करा गला फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन? सी, C++, जावा। ठीक अछि। देन एग्जांपल आसीबो यार कोन जेमिति डेस्कटॉप, लैपटॉप को यूज करा गला फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। देन यार कोन कोन फीचर रहला देखंतु। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस होला। नेटवर्क कैपेबिलिटी रहला, नेटवर्क को एक्सेस करा गला। देन एटा पोर्टेबल माने स्थानांतरण हे पड़ला, स्थानांतरण करा जाय पड़ला जेमिति लैपटॉप्स, टैबलेट्स यार एग्जांपल अटे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेलको। देन वर्तमान ठारू भविष्यत को जो कंप्यूटर को यूज करा जाउची दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो टेक्नोलॉजी को यूज करा गला दैट इज आपनकर ULSI को जाय अल्ट्रा लार्ज स्केल रो इंटीग्रेशन को यूज करा गला। एंड याको पैरेलल प्रोसेसिंग मध्य को जाय परिहार आसे। पैरेलल प्रोसेसिंग ता आपनकर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे वर्क करूची। एथिरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेमिति आपनकर पाइथन, ओके, एआई बेस्ड जहां भी आपनकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सब गुडा को काम करूची फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। फीचर कोन रहिछि यार? मशीन लर्निंग रहिछि, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एंड सेल्फ लर्निंग सिस्टम रहिछि दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे। सिंपली पॉइंट रहिछि, सिंपल पॉइंट आपन को मन रखिबार अछि। परीक्षा रे एथरो ही प्रश्न आसे आपनकर। ओके, एग्जांपल जेमिति आपनकर गूगल असिस्टेंट आसी गला। सुपर कंप्यूटर यूजिंग AI दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रो एग्जांपल अटे। देखंतु परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसुची जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
प्रश्न आसीबो डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड प्रथम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे कोन यूज करा जाउथिला वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करा जाउथिला हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ओके कंप्यूटर रो जनक भाबरे जणा जाय यूनिवाक बिलोंग टू व्हिच जनरेशन रो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन रो कंप्यूटर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर थिला इंटेल रो 4004 इंटेल कंपनी मन रखंतु व्हिच जनरेशन यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे एआई को यूज करा गला ओके नहीं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होची असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्यवहार करा जाउथिला दैट इज होची आपनकर असेंबली लैंग्वेज नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रे आईसी को इंट्रोड्यूस करा गला इंटीग्रेटेड सर्किट फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होची फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज यूएलएसआई रो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन रो कंप्यूटर रे यूएलएसआई रो टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा गला नेक्स्ट व्हिच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्यों जनरेशन रे इंट्रोड्यूस करा गला फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेले ओके प्रश्न आपनकर एमिति रहउछि मन रखंतु देन हमें डिस्कशन करिबा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को क्लासिफाइड करा जाईछि बेस्ड ऑन फोर मेन क्राइटेरिया चारोटी मुख्य क्राइटेरिया को नै आपनकर कंप्यूटर को कोन करा जाईछि विभागीकरण करा जाईछि फर्स्ट बार होछि पर्पस को नै मुख्यतः दुई भाग रे गोटे होछि जनरल पर्पस रो कंप्यूटर अन्यटी होछि स्पेशल पर्पस रो कंप्यूटर जनरल पर्पस रो कंप्यूटर कोन जनरल पर्पस रो कंप्यूटर मुख्यतः आपण पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन देखिया पई पाइबे जा आपनकर स्कूल ऑफिस होम्स रे आपण व्यवहार करंती एंड किछि वैरायटी टास्क को एकम्प्लिश करिया पई जनरल पर्पस रो कंप्यूटर को व्यवहार करंती बट स्पेशल पर्पस रो कंप्यूटर को कोथि पई व्यवहार करा जाय जेमिति आपण एटीएम्स रे देखंती जो कंप्यूटर को यूज करा जाय वॉशिंग मशीन आपनकर वर्क करूची ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रे स्पेशल पर्पस रो कंप्यूटर ओके दैट इज डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क किछि निर्दिष्ट काम को संपादन करिवा पई स्पेशल पर्पस रो कंप्यूटर को यूज करा गला दैट इज इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स इत्यादि क्षेत्र रे आपनकर स्पेशल पर्पस रो कंप्यूटर यूज हुए ओके देन देखो तो बेस्ड ऑन साइज एंड पावर को नेकी कंप्यूटर को विभागीकरण करा गला गोटे होची सुपर कंप्यूटर गोटे एग्जांपल होची परम मन रखंतु परीक्षा आसबारे परम गोटे सुपर कंप्यूटर ओके मोस्ट पावरफुल एंड एहार प्रोसेसिंग हाई स्पीड प्रोसेसिंग रहिछि क्लियर मोस्ट पावरफुल एंड हाई स्पीड प्रोसेसिंग देन आसिला मेन फ्रेम कंप्यूटर आपनकर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रे किबा वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जाको बल्क ऑफ डाटा को आजे सेटा प्रोसेस कराया पई मेन फ्रेम रो कंप्यूटर को यूज करा गला ठीक है बड़ बड़ अनुष्ठान मानकरे आपनकर मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर आपनकर देन सिंपली आपण कहि परिबे दैट इज मल्टीपल यूजर को एक्सेस करबा पई जेमिति मिनी कंप्यूटर को यूज करा गला देन वेरी इंपोर्टेंट माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स क्यों कंप्यूटर रो कैटेगरी रे आसी जिवे दैट इज माइक्रो कंप्यूटर रो कैटेगरी रे आसी सिंपली मन रखन सिंगल यूजर जनरल पर्पस रो कंप्यूटर अटंती देन आसिला आपनकर वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस पीसी फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क जेमिति 3D डिजाइनिंग कुछ CAD डिजाइनिंग आपनकर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग क्षेत्र रे वर्क स्टेशन को यूज करा गला मन रहिला देन हमें जिबा बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग नेचर ऑफ डाटा को नेकी प्रथमे आसीबो आपनकर एनालॉग कंप्यूटर ता केमिति वर्क करूची एथरे कंटीन्यूअस डाटा फ्लो होबो सप्लाई होबो देन एनालॉग कंप्यूटर रन करिवो एथरे
इलेक्ट्रिक सिग्नल को फ्लो करा जाए इट मींस कोन एथरे कोनोसी भी बाइनरी वैल्यू यूज हुए नै एग्जांपल स्पीडोमीटर ही परिबो थर्मोमीटर ही परिबो यार बेस्ट एग्जांपल देन वर्तमान आमे जो कंप्यूटर यूज करू छथि दैट इज होचे डिजिटल कंप्यूटर्स केमिति काम करूची वर्क ऑन बाइनरी डाटा 0 एंड 1 रे दैट इज डिजिटल कंप्यूटर्स काम करे मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे वर्तमान आमे यूज करूछंती एग्जांपल लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स आपनकर स्मार्टफोन गोटे कोन डिजिटल कंप्यूटर एंड गोटे माइक्रो कंप्यूटर रो कैटेगरी रे आसी जिवो देन आसिला हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर को जेताले आपण कंबाइन करिवे एवं जहा जहा आपण फीचर यूज करि परिवे कंबाइन करी दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर Hybrid computer basically used in medical equipment like ECG किमा कोनोसी scientific work or weather forecasting क्षेत्र रे आपनकर हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज करा जाए ठीक अछि हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज करा जाए ओके देन जिबा हमें बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग पावर को नेकी सर्भर कंप्यूटर कोन जेउ कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करिवो अन्य कंप्यूटर को बा क्लाइंट कंप्यूटर को दैट इज कहलिवो सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कोन जहा सर्विस रिसीव करिवो दैट इज क्लाइंट कंप्यूटर सेमिति एम्बेडेड कंप्यूटर होची जहा को आपण फर्दर कोनोसी मॉडिफाई करि परिबे नाही दैट इज किसी स्पेसिफिक वर्क पई यूज करा जाय जेमिति आपण का माइक्रोवेव रो ओवन हेला कार सिस्टम रे थिबा कंप्यूटर होची एम्बेडेड ओके built into a machine for specific control ठीक अछि माने किछि स्पेशल पर्पस रे ही दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर आपनकर फॉर्म होइता है देखंतु परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसुची व्हिच कंप्यूटर इज फास्टेस्ट आपनकर सुपर कंप्यूटर सबुठार अधिक फास्ट वर्क करिवो व्हिच कंप्यूटर इज यूज्ड बैंकिंग एंड रेलवेज रे मेन फ्रेम रो कंप्यूटर को यूज करा जाय पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर अटे एनालॉग कंप्यूटर डील्स विथ एथरे कंटीन्यूअस डाटा को फ्लक्चुएट करा जिवो डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी डाटा 0 and 1 हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशंस रे हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल ऑफ ए जनरल पर्पस रो कंप्यूटर होची लैपटॉप होची एक जनरल पर्पस रो कंप्यूटर What type of computer is used in washing machine? Special purpose or embedded computer? Which computer supports multiple user? Mini computer or mainframe computer? Simply मन रखंतु mini computer or mainframe computer. Next हमें डिस्कशन करिबा कंप्यूटर रो हार्डवेयर कोन हमें जानि छथि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर और jaku tangible part of the computer ko aje means we can see and touch that is called hardware okay hale types of computer hardware prathame ame discussion kariba input device what is input device जेउ device जरिया रे computer को instruction दिया जाए बा input दिया जाए that is which input device keyboard primarily input device होते mouse एक pointing device होते scanner convert physical document into digital format. Scanner got input device, microphone capture sound input को, joystick used in gaming paint that is also got input device, webcam capture images, videos that is आपनकर webcam कुहाजिबो. Okay. Next देखो तो आपनकर रहला processing device. Processing device होची CPU, central processing unit, brain of the computer perform all processing ALU arithmetic logic unit handles calculation and logical decision को CU होची control unit directs the flow of data or instruction and आपनकर CPU टा ALU and CU को नै गठित होइथाय ओके दैट इज प्रोसेस करेबे देन आसिला आपनकर आउटपुट डिवाइस कोन जहा कंप्यूटर रिजल्ट दबो दैट इज होची आउटपुट डिवाइस मॉनिटर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट को जाय डिस्प्ले आउटपुट एटा आपन को टेक्स्ट किबा ग्राफिक्स रो आकार रे आपन देखिया पई पाइबे सेमति प्रिंटर रहला प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ठीक अछि सॉफ्ट कॉपी टा स्क्रीन आउटपुट होची आपनकर सॉफ्ट कॉपी बट प्रिंटेड आउटपुट होची हार्ड कॉपी मन रखन स्पीकर आउटपुट साउंड्स एंड प्रोजेक्टर डिस्प्ले आउटपुट ऑन लार्ज स्क्रीन रे
that is output device. Then asla apanଙ୍କର storage device देखंतु store data permanently or temporarily जेमति apanଙ୍କର primary memory RAM and ROM, random access memory and read only memory, random access memory and read only memory. Okay, fast access memory एटा को आपण temporary and permanent base रे यूज करि परिबे जेमिति RAM टा आपनकर कोन दैट इज volatile माने डाटा रिटेन करिवो नाही जिते बेले आपण पावर लॉस करेबे तो ROM टा डाटा रिटेन करेबो दैट इज नॉन volatile. ओके, जेमिति असला सेकेंडरी स्टोरेज HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD होची कंपैक्ट डिस्क, DVD होची डिजिटल वीडियो डिस्क. नेक्स्ट जीवा हमें स्टोरेज डिवाइस सल्ला देखंतु स्टोरेज डिवाइस रो सेकेंडरी देखिले देन रहला आपनकर टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस जेमिति क्लाउड किबा आपनकर जेमिति गूगल ड्राइव्स. ओके, दैट इज कोन ऑनलाइन रे जोटा आपन स्टोर करंती कोन बैकअप किबा आर्काइवल स्टोरेज भाबरे. एंड रिमूवल स्टोरेज डिवाइस रहला पेन ड्राइव रहला, मेमोरी कार्ड रहला, दैट इज पोर्टेबल हे परिबो एंड रिमूवल हे परिबो. इट मींस जहां भी आपण इनपुट देबे दैट इज कोन हबो प्रोसेस हबो, प्रोसेस पर सेटा आपन स्टोर हबो, देन दैट इज आउटपुट आसीबो. दैट इज द स्ट्रक्चर. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस जहां आपन कंप्यूटर रो हार्डवेयर रो कैटेगरी रे आसीबे. देन हम डिस्कशन करिवा मेमोरी यूनिट. देखंतु डाटा रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कोन कहआ जाय, बिट कहआ जाय. कोन कहआ जाय, बिट. बिट होची बाइनरी डिजिट जहां डाटा रो स्मॉलेस्ट यूनिट अटे. सेमिति बाइट कोन देखंतु 8टा बिट्स जदि मिसिबो ताले गोटे बाइट हबो. गोटे बाइट केतेले हबो 8टा बिट्स जेतेबेले मिसिबो. क्लियर. सेमिति केबी होची किलोबाइट. कोन है किलोबाइट, जेतेबेले 1024 टी बाइट्स मिसिबे, 1024 टी बाइट्स मिसिबे सेतेबेले गोटे किलोबाइट हबे. सेमिति असला आपनकर एमबी होची मेगाबाइट. 1024 किलोबाइट मिसिले गोटे मेगाबाइट हबे. ओके, देन असला जीबी जिगाबाइट. 1024 मेगाबाइट मिसिले गोटे जिगाबाइट हबे. देन असला टीबी जाको टेराबाइट कहआ जाय. 1024 रो जीबी मिसिले गोटे टेराबाइट हबे. दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मन रखंतु. ओके, देन आपनकर अदर हार्डवेयर कंपोनेंट विषय जब कथा हवा मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को कोन कहआ जाय, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्ये कहआ जाय. ओके, मन रखंतु मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्ये कहआ जाय. मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स all parts, or we can say जहां भी आपनकर कंप्यूटर रो इंपोर्टेंट पार्ट सब रहिछि मदरबोर्ड मध्ये कोन रहबो माउंट हेकी रहबो. जेते रैम कार्ड, सीपीयू, प्रोसेसर, ओके, सीपीयू फैन, सीपीयू सॉकेट सब उडा आपनकर माउंट हेकी रहे. देन असला एसएमपीसी. एसएमपीसी टा मुख्यतः पावर सप्लाई पे यूज हुए. अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट रे कन्वर्ट करिवो एसएमपीसी. BIOS जाको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहआ जाय. दैट इज प्री इंस्टॉल्ड माने पूर्वरु इंस्टॉल हेकी रहइबो गोटे फर्मवेयर अटे. दैट स्टार्ट्स द सिस्टम. एहा कोन करिवो कंप्यूटर को जेतेबेले आपण रन करिवे, आपण ऑपरेटिंग सिस्टम ता जेतेबेले रन हबो जेतेबेले BIOS रो भूमिका थाए. देन हीट सिंक और फैन रो काम होची गोटे हार्डवेयर सीपीयू को कूल रखिवो. हीट सिंक और फैन जा कहआ जाय. देन असला पोर्ट्स. ए पोर्ट्स कोन करिवो कनेक्ट external device like USB and HDMI. external device को कनेक्ट करिवो दैट इज कोन आपनकर पोर्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट हम डिस्कशन करिवा देखंतु दैट इज असला आपनकर एक्सपेंशन कार्ड. एक्सपेंशन कार्ड रो काम कोन एड ऑन लाइक साउंड कार्ड्स एंड ग्राफिक कार्ड्स. ओके, इट मींस आपण कोनोसी भी एक्स्ट्रा साउंड कार्ड किबा एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड्स को ऐड करिया पई चाहिबे आपनकर कंप्यूटर रे ताले एक्सपेंशन कार्ड्स जरिया रे आपण एक्सेस करि परिबे, मींस ऐड करि परिबे. ओके, परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसुजे देखिबा. देखंतु ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कोन हबो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. व्हिच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज टच स्क्रीन. बोथ इनपुट एंड आउटपुट भाबरे काम करिवो परीक्षा रे आसीबो. स्टोरेज डिवाइस विथ फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड. SSD सॉलिड स्टेट रो ड्राइव बहुत फास्ट एक्सेस करेबो किंतु यार स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम. दैट्स व्हाई HDD को यूज करा जाय, हार्ड डिस्क ड्राइव. ओके,
देन आसला टेम्पोरारी मेमोरी इन ए कंप्यूटर होची RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी which component converts AC to DC SMPS मन रखंतु where is BIOS stored BIOS आपनकर read only memory रे स्टोर हे कि रहे full form of ALU arithmetic logic unit primary storage रो example होची RAM random access memory then which unit is larger GB or TB means gigabyte or terabyte हो because 1024 GB रे गोटे terabyte then आपनकर what connects all hardware components motherboard और एटा को PCB को जे printed circuit board clear hardware बुझी हला एवं केमिति प्रश्न आछि जानि हला देन आमे डिस्कशन करबा कंप्यूटर रो सॉफ्टवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिंपली जदि बुझिबा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हे परिबो और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जाको इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मध्ये कोआ जाय मींस वी कैन सी बट वी कांट टच दैट इज होची कंप्यूटर रो सॉफ्टवेयर यह मुख्यतः दुई प्रकार रो एप्लीकेशन एंड सिस्टम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जदि जिबा हमें प्रथमे आसीबो सिस्टम सॉफ्टवेयर रो काम होची आपन को कंप्यूटर को रन करेबो मींस कंट्रोल मैनेज द हार्डवेयर एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर ताले कोन एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम जेमिति आपनकर मैनेज करेबो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को विंडोज लाइनक्स ओके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अटे डिवाइस ड्राइवर्स आपनकर हेल्प करिवो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करिवो विथ हार्डवेयर सहित जेमिति प्रिंटर आपन इंस्टॉल करिवे प्रिंटर पे गोटे ड्राइवर आपन इंस्टॉल करिवार अछि सो दैट प्रिंटर वर्क करिवो कंप्यूटर रे समिति यूटिलिटी सॉफ्टवेयर गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक देखो एंटीवायरस डिस्क क्लीन अप गोटे कोन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अटंती समिति लैंग्वेज ट्रांसलेटर माने कोन करिवे प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवे बिकॉज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज राइट दैट्स व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर मध्ये गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर रो अंतर्भुक्त अटे ताले देखो कोन सब आपनकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहिछि गोटे होछि कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर मन रखंतु असेंबलर रो काम होछि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवो ओके इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करिवो एंड एग्जीक्यूट करिवो कोड को लाइन बाय लाइन मेथड रे दैट इज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर कंपाइलर रो काम होछि translates the entire high level program into machine code at once okay clearly बुझियला compiler interpreter and assembler को भला भाबे then आसीबे आपनकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इच यूजर स्पेसिफिक टास्क पई जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करा जाय दैट इज होची आपनकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जेमिति जनरल पर्पस रो सॉफ्टवेयर रहइबो MS Word, Excel, PowerPoint and web browser Google Chrome जेमिति ओके स्पेसिफिक पर्पस रो किछ सॉफ्टवेयर होची रेलवे रिजर्वेशन बिलिंग सॉफ्टवेयर वी कैन से ओपन सोर्स रो सॉफ्टवेयर माने फ्रीली जोटा आपण मॉडिफाई करि परिबे लिनक्स लाइब्रेरी ऑफिस ओपन ऑफिस इट मींस आपण को यारो सोर्स कोड परचेस करिबा पई पड़िबो नाही ओके दैट इज ओपन सोर्स प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कोन पेड यार लाइसेंस को आपन को किनिबा पई पड़िबो दैट इज एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट रो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर अटंती ओके जहां फ्रीली अवेलेबल दैट इज ओपन सोर्स जहां फ्रीली अवेलेबल नाही दैट इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर अटे क्लियर बुझी पाउछंदी नो डाउट नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आसला आपनकर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मुख्यतः प्रोग्राम को लेखिबा पई एंड यह डेवलपर्स माने यूज करंती प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सिंपली मन रखंतु देन देखंतु की डिफरेंस कोन रहिछि आपनकर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भितरे हार्डवेयर टैंजिबल सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल यार फंक्शन होछि परफॉर्म टास्क करिवो एटा इंस्ट्रक्ट करिवो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर फेलियर हेले दैट इज फिजिकल डैमेज को आजिवो एवं सॉफ्टवेयर रे जो एरर बा फेलियर आसीबो दैट इज बग्स को आजिवो एंड एरर को आजिवो एवं ए फेलियर को सॉल्व करबा होछि डिबग हार्डवेयर रे एग्जांपल सीपीयू रैम ही परिबो सॉफ्टवेयर विंडोज एमएस वर्ड एमएस एक्सेल गूगल क्रोम एडोबी फोटोशॉप गोटे सॉफ्टवेयर एवं परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसे देखो परीक्षा रे प्रश्न आसे software that manage
hardware is that is operating system. Operating system गोटे केउ प्रकार सॉफ्टवेयर अटे system software अटे which is not a system software. MS Word गोटे system software हेबो नाही कारण MS Word होचे एको application software. Okay, which software translates high level to machine code. Compiler गोटे कोन system software language translator अटे high level को machine code रे convert करिवो. Which software is used for billing like specific purpose रो application software को आपण billing क्षेत्र रे यूज करि परिबे. Example of open source software आपनकर Linux हे जिवो गोटे open source किंतु MS Windows गोटे proprietary software अटे. Okay, देखंतु which software is pre-installed in computer? System software कोन operating system. What type of software is an antivirus? Antivirus utility software अटे. Example of programming software that is compiler. Which software is paid and licensed? Proprietary software जेमति MS Windows. Full form of OS होची operating system. Clearly बुझियला. Okay, then आमे डिस्कशन करिवा operating system. Operating system मु जेमति कहली that is गोटे इंटरफेस यूजर एंड हार्डवेयर भीतर. यूजर केमिति गोटे हार्डवेयर को एक्सेस करेबो कहा जरिया रे ऑपरेटिंग सिस्टम तो जहा कंप्यूटर को रन करेबो. ठीक अछि. इट मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल प्रोसेस एंड रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर अटे. देखंतु यार कोन कोन सब फंक्शन रही छी. प्रोसेस मैनेजमेंट करेबो. सिंपली गोटिए पॉइंट रे मन रखंतु. इट मींस मैनेज करे परिबे प्रोसेस को रनिंग प्रोग्राम्स को. मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट एंड डी एलोकेट करि परिबे मेमोरी को. ओके, मेमोरी टा कोन स्टोर पे यूज करा जाय. जे कोनो सी फाइल को मैनेजमेंट करा जाय परिबो, ऑर्गेनाइज करि परिबे, कंट्रोल करि परिबे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को. डिवाइस को मैनेजमेंट करि परिबो, कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस यूजिंग ड्राइवर्स. यूजर इंटरफेस लाइक प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आपनकर we can say command line रो इंटरफेस टू इंटरैक्ट विथ यूजर. सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो, कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस रो प्रोटेक्ट करिवो एंड मल्टीटास्किंग करि परिवो. मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करि परिबे साइमल्टेनियसली. बुझि परछन म कथा. नेक्स्ट, एरर को डिटेक्ट करिवो, डिटेक्ट एंड हैंडल करिवो सिस्टम एरर को. दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम रो काम. ताहले आपनकर ऑपरेटिंग सिस्टम कोन कोन हे परिवो देखंतु. गोटे होची बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच वाइज जोटा आपनकर काम हो. ठीक अछि, यूजर इंटरेक्शन रे. देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीपल यूजर टू शेयर सिस्टम एट द सेम टाइम रे. दैट इज टाइम शेयरिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एज ए सिंगल सिस्टम भाबरे. गोटे पॉइंट रे मन रखिबा. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डाटा इंस्टेंटली विथआउट डिले. रियल टाइम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टा कोन आपनकर मैनेज कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपण यूज करछन स्मार्टफोन टैबलेट रे. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बिल्ट इनटू ए डिवाइस फॉर स्पेसिफिक फंक्शन पे. क्लियरली बुझि परछन. नेक्स्ट देखंतु आपनकर आसिला यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मुख्यतः दुई प्रकार रो आपण यूजर इंटरफेस को नै कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखिया पई पाइबे. गोटे होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अन्यटी होची कमांड लाइन रो इंटरफेस. एमएस विंडो और आपनकर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड आपनकर डॉस एंड लाइनक्स गोटे कोन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मींस कोन देखंतु एथिरे आइकन्स रहइबो. ठीक अछि, ग्राफिक्स को यूज करा जिवो, विंडोज को यूज करा जिवो, किंतु कमांड लाइन इंटरफेस रे ओनली आपण कमांड्स को ही यूज करि परिबे. ठीक अछि, कमांड को ही प्रॉम्प्ट करि परिबे जहा ओनली टेक्स्ट बेस्ड रहिबो. ओके, एथिरे आपण इमेज आइकन्स एगुडा को रहबो नाही कमांड लाइन रे. ओके, ए दुई प्रकार परीक्षा रे आसीबो. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड करा जाउथिबा एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे जीयूआई और सीएलआई अंतर्भुक्त रे आसे. दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रो अंतर्भुक्त रे आसीबो. जल्दी बुझियला. सेमिति माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट रो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे कमांड लाइन इंटरफेस अंतर्भुक्त रे आसी जिवो. ओके, एई दुई प्रकार रो ऑपरेटिंग सिस्टम रही छी. देन देखंतु आपनर किछि ऑपरेटिंग सिस्टम विषय जदि कथा हबा विंडोज, लाइनक्स, मैक,
एंड्रॉइड तो मोबाइल रे, iOS आपनकर एप्पल्स रे, यूनिक्स देन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रहिछि। परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसे देखंतु। ओके करि परिबे एमिति प्रश्न आसीबो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड यूजर मध्य रे गोटे इंटरफेस भाबरे काम करिवो। Which operating system is used in smartphone, Android and iOS? Linux is an example of open source operating system, माने freely available. Which operating system allow multiple users to work at the same time रे, that is time sharing operating system. Which operating system is used in ATMs and robots रे, that is real time operating system. माने रखंतु परीक्षा रे आसे प्रश्न। What type of operating system is Windows? Windows कौन गोटे graphical user interface and general purpose operating system अटे। Which operating system use commands to operate? That is CLI जोटा आपनकर DS command line operating system, DIX operating system हबो। Full form of GUI graphical user interface मने रखंतु। Next देखंतु which operating system manage resource in a network? That is network operating system. DOS is a which type of operating system? Single user and command line ro operating system अटे। Clear? Next आमे discussion करिवा revision करिवा computer रो network very important. What is computer network? Simply जेते बेले मिनिमम दुईटी कंप्यूटर किंबा दुई रु अधिका कंप्यूटर परस्पर मध्य रे कनेक्ट हेबे एवं सेमाने शेयर करिवे डाटा को रिसोर्स एंड सेमाने कोन करिवे कनेक्ट करिवे ईच डिवाइस सहित ताले गोटे नेटवर्क फॉर्म हबो दैट इज क्वाजिबो कंप्यूटर नेटवर्क। इट मींस इंटरकनेक्टेड ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपली मन रखंतु एवं एही कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा कोन करा जाय परछि आपण रिसोर्स को शेयर करि परछन। ठीक अछि जेमिति प्रिंटर्स फाइल्स इंटरनेट एवं यह कॉस्ट इफेक्टिव अटे। ठीक अछि बहुत कम कॉस्ट रे बहुत किछि सुविधा आपण इंटरनेट बा वी कैन से गोटे नेटवर्क रे आपण एक्सेस करि परछन। इजी कम्युनिकेशन है पाउछि ईमेल्स मैसेजिंग क्षेत्र रे सेंट्रलाइज्ड डाटा को मैनेजमेंट करा जाय पारुछि एंड डाटा को बैकअप सहित सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाय पारुछि। दैट इज गोटे एडवांटेज अटे नेटवर्क रो। देन किछि इंपोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क मन रखंतु LAN लोकल एरिया नेटवर्क एटा केवल गोटे बिल्डिंग किंबा कोनसे को कैंपस में ही एई फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाय। एग्जांपल ऑफिस और स्कूल लैबोरेटरी परिबो। देन आसला मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एटा गोटे शहर मध्य रे जेमिति आपनकर एग्जांपल ही परिबो केबल टीवी रो नेटवर्क। वन वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस कंट्री और कॉन्टिनेंट्स रे इंटरनेट परीक्षा आसे इंटरनेट आपनकर एक केउ प्रकार रो नेटवर्क अटे दैट इज वाइड एरिया रो नेटवर्क अटे। देन आसला आपनकर पान पर्सनल एरिया नेटवर्क एटा कोन माने बहुत कम एरिया मध्य रे ठीक अछि दैट इज यूज करा जाय ब्लूटूथ हॉटस्पॉट दैट इज पान कैटेगरी रे आछि। देन आसला VPN होची वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क ओवर इंटरनेट। ठीक अछि सिक्योर रिमोट एक्सेस पे आपण VPN यूज करंती। ओके देन आसला आपनकर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क को नेटवर्क रो टोपोलॉजी कहा जाय। मींस नेटवर्क रो अरेंजमेंट को कोन कहा जाय नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाय। कोन रहिछि देखंतु सिंपली मन रखंतु पोस्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी मेश एंड ट्री टोपोलॉजी। ओके बस रे कोन हबो गोटे सिंगल सेंट्रल हब रहइबो। ठीक अछि स्टार रे मध्ये गोटे सेंट्रल हब रहइबो। रिंग ता कोन डाटा फ्लो करिवो गोटे सर्किल रे। मेश ता आपनकर एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर अन्य सहित। ओके देन आपनकर ट्री डिवाइस ता जतले स्टार आ बस को आपण मर्ज करिवे दैट इज ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी पाइबे। ओके देन देखंतु देन आसला आपनकर किछि नेटवर्किंग डिवाइस परीक्षा रे प्रश्न आसीबो रूटर कोन रूटर होची कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट्स डाटा पॉकेट्स। सिंपली मन रखंतु रूटर रो काम कोन अलगा अलगा नेटवर्क को कनेक्ट करिवो एंड डाटा पॉकेट को डायरेक्ट करिवो। ओके माने केउ वे रे डाटा फ्लो हबो दैट इज डायरेक्ट करिवो। स्विच रो काम होची कनेक्ट डिवाइस इन LAN रे लोकल एरिया नेटवर्क रे डिवाइस को कनेक्ट करिवो स्विच। हब रो काम कोन ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल डिवाइस ब्रॉडकास्ट के करिवो हब करिवो। मॉडेम वेरी इंपोर्टेंट
convert analog signal को digital रे and vice versa digital को analog रे, that is modulation and demodulation को bridge रो काम कौन connects two different lamps को दुईटा अलग अलग lamps को local area रो network को connect करिवो bridge। then असले आपनकर रिपीटर रो काम होची सिग्नल को बूस्ट करिवो लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत। एक्सेस पॉइंट कौन देखंतु allow wireless device to connect a wired network गोटे wireless रो network को wired network सहित or we can say wireless device को wired network सहित connect करिवो, that is access point गोटे device अटे। access point कौन गोटे device अटे। then किछि important networking terms विषय में डिस्कशन करिबा। IP address जाउची इंटरनेट प्रोटोकॉल रो एड्रेस अटे। एटा यूनिक नंबर असाइन टू ईच डिवाइस, प्रत्येक कंप्यूटर रो IP डिवाइस IP एड्रेस सेम रहइबो और अलग अलग रहइबो दैट इज यूनिक रहइबो। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क डिवाइस, गोटे नेटवर्क डिवाइस रो एड्रेस ता होचे मैक एड्रेस। देन आसले आपनकर बैंड विड्थ, amount of data transmitted in a given time, आपण केते जेमिति केते जीबी रो बा केते एमबीपीएस केते केबीपीएस रो डाटा आपण यूज करछन, आपण डाटा स्पीड ता होचे बैंडविड्थ। लेटेंसी कोन, लेटेंसी होची डिले इन डाटा ट्रांसफर को लेटेंसी को आजिवो। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल और किछि रेगुलेशन इन कम्युनिकेशन और नेटवर्क रे प्रोटोकॉल। फायरवॉल रो काम होची सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक। अनऑथराइज्ड फाइल को आपनको कंप्यूटर मध्य को आसीबा पय दबो नाही, that is होची आपनकर फायरवॉल। ओके देन आपनकर किछि कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल रहला TCP and IP, that is transmission control protocol and internet protocol। core protocol of the internet ता काम करूची, that is transmission control protocol and IP को नै। HTTP and HTTPS hypertext transfer protocol and S is used for secure purpose, used for web browsing पय। FTP होची फाइल ट्रांसफर, आपण अपलोड डाउनलोड करंती। SMTP मेल को सेंड करिया पय, ठीक अछि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 एंड IMAP ता आपनकर मेल को रिसीव करिया पय जो प्रोटोकॉल यूज करा जाय। DNS होची आपनकर कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम रो प्रोटोकॉल अटे। परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसे देखंतु, डायरेक्ट क्वेश्चन होची फुल फॉर्म ऑफ LAN कोन हो, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हिच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, दैट इज रूटर रो काम। Which network cover a small geographical area, that is local area network? What does IP stands for? Internet protocol. What is the function of the modem? Modem ro function kono, convert analog to digital signal रे। Which topology has central hub रहिबो, star topology रो। full form of HTTP hypertext protocol, hypertext रो transfer protocol जदि SI जीवो secure purpose रे। which protocol is used to receive email by POP3, post office protocol version 3 and IMAP internet message access protocol मध्ये यूज करा दे रिसीव करिया पे। which device is used to extend networking range, that is repeater रो काम होची जा गोटे सिग्नल बूस्ट करेबो। which is the largest network, internet जा one category आसीबो wide area network अंतर। देन आमे जिबा इंटरनेट रो। इंटरनेट कोन देखंतु, आमे जते बेले जानिले नेटवर्क होची दुईटा कंप्यूटर जते बेले कोन करिवो कनेक्ट हो एवं सेमान मध्ये कोन हबो रिसोर्स करिवो। इंटरनेट होची नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कहरे। सिंपली मन रखंतु, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन किछि प्रोटोकॉल जरिया रे इंटरनेट कहदिबो। परीक्षा रे आसीबो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होची इंटरनेट। सिंपली मन रखंतु, की फीचर ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड रो लार्जेस्ट होची आपनकर वन वाइड एरिया नेटवर्क होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट गोटे इंटरनेट बेस्ड ऑन, दैट इज इंटरनेट काम करूची TCP एंड IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल को नै कि आपनकर, ठीक अछि। एटा होची वर्किंग मॉडल। कोन कोन ए ऑफर करूची सर्विस लाइक वेब ब्राउजिंग करि परिबे, ईमेल करि परिबे, फाइल ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग करि परिबे, ऑनलाइन बैंकिंग etc आपण इंटरनेट जरिया रे यूज करि परिबे। किछि इंपोर्टेंट टर्म्स www world wide web, a system of interlinked web page and content, right? URL uniform resource locator, that is basically address अटे। web browser software to access the website जेमति Chrome and Firefox गोटे गोटे web browser अटंती। search engine tool to search information, example Google and Bing हे परिबो। जेमति website a collection of web pages को कोन कह जाय, website कह जाय।
वेबसाइट क्या हुआ जाए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेब पेज कौन ए सिंगल पेज ऑफ ए वेबसाइट को वेब पेज कह दिबो hyperlink a clickable link to another web page or website that is hyperlink home page क्या हुआ जो first page or main or starting page of the website को home page कह दिबो domain name कौन human readable name of an IP address होचे आपनकर domain name जेमिति आपनकर .com .in ठीक अछि .edu एग्जांपल आपण देखि परिबे www.amazon.com IP address होचे इंटरनेट प्रोटोकॉल रो एड्रेस न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क देखंतु एटा होचे IP एड्रेस रो एग्जांपल होते डाउनलोड कोन रिसीव डाटा फ्रॉम इंटरनेट होचे डाउनलोड एंड सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट होचे अपलोड देन बैंडविड्थ भी जानिले अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन ए गिवन टाइम होचे आपनकर बैंडविड्थ ओके सेमिति क्लाउड कंप्यूटिंग तो जानिछन्ती इंटरनेट बेस्ड एक्सेस टू सॉफ्टवेयर स्टोरेज रिसोर्स इंटरनेट रे दैट इज ऑनलाइन मीडियम रे ऑनलाइन रे आपण जोटा स्टोर करिवे एक्सेस करिवे जहा रिसोर्स को यूज करिवे दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल http और https ट्रांसफर वेब पेज यार फंक्शन एस्टा यूज होची सिक्योर पर्पस रे ftp फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ताको करिवो फाइल को ट्रांसफर करिवो देन असला tcp/ip फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट ठीक अछि डीएनएस होची डोमेन नेम सिस्टम रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस रे TOIP रो फुल फॉर्म ता मन रखंतु वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक स्काइप व्हाट्सएप कॉल आपण जा यूज करंते VoIP प्रोटोकॉल अंडर रे आसी जाय देन असले आपनकर ईमेल रो बेसिक कांसेप्ट्स देखंतु ईमेल कोन इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल कोन इलेक्ट्रॉनिक मेल मन रखंतु इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज भाया इंटरनेट डिजिटली मैसेज को एक्सचेंज करबा कहा जरिया रे इंटरनेट जरिया रे दैट इज आपनकर इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल इंपोर्टेंट किछ टर्म्स रहिछि ईमेल एड्रेस यूनिक आईडी सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल एड्रेस होछि एग्जांपल देखंतु प्रथम यूजर आसीबो @ आसीबो example.com दैट इज गोटे ईमेल एड्रेस एथरे इनबॉक्स रहिछि जहां भी आपण मेसेज रिसीव करिवे इनबॉक्स रे सेंड आइटम्स जहां आपण मेल सेंड करचंती ड्राफ्ट टा कोन आपनकर जोटा सेंड करिया पई चाहिचंती बट कोनोसी कारण बसतो सेटा सेंड हे नै सेटा आपनकर ड्राफ्ट रे सेव हे रहबो देखंतु अनसेंड सेव हबार थिला सेव हे नै अनसेंड सेव्ड ईमेल ड्राफ्ट रे आपनकर स्टोर हे कि रहे सेमति ट्रैश रो काम कोन डिलीटेड स्पैम रो काम होची अनवांटेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस गुडाको आपनकर स्पैम रे आसीबो सब्जेक्ट रे आपनकर कोन रहबो टाइटल एंड मेल टॉपिक ऑफ द मेल रहबो अटैचमेंट रे आपण फाइल को अटैच करि परिबे इमेज ही परिबो कोनसी स्मॉल माने आई थिंक यार मैक्सिमम लिमिट रहउची 25 MB रो फाइल को आपण अटैच करि परिबे सीसी होची कार्बन कॉपी बीसीसी होची ब्लाइंड कार्बन कॉपी सीसी एंड बीसी कोन सेंड कॉपी टू अदर रिसिपिएंट्स ठीक अछि एंड बीसीसी होची सेंड कॉपी विदाउट रिवीलिंग टू अदर्स अन्य को रिवील न करी आपण कॉपीटा सेंड करिवे दैट इज बीसीसी देन ईमेल रो प्रोटोकॉल होची एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एटा आपनकर सेंड करिवा पई एवं एही दुईटा रिसीव करिवा पई यूज करा जाय ठीक अछि रिसीव मींस डाउनलोड ईमेल्स टू डिवाइस एंड डिलीट फ्रॉम सर्वर ऑफ दैट इज POP3 एक्सेस ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर ऑफ दैट इज IMAP मन रखन सिंपली ओके देन एटा आपनकर ईमेल रो फॉर्मेट म ऑलरेडी कहि सारछि हमें ओके या विषय डिस्कशन करछन्ती जेमति gmail.com yahoo.com गोटे ईमेल प्रोवाइड करंती परिहार केमति प्रश्न आछि देखंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल SMTP रिसीव पई POP3 वर्जन POP वर्जन 3 एंड IMAP रिसीव करिवे फुल फॉर्म ऑफ URL but URL होची एड्रेस वेब एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व्हाट डज IP stands for internet protocol what is the main function of a browser to access website browser रा काम कोन browser जरिया रे आपण वेबसाइट को एक्सेस करि परिबे what is domain name human readable web address होची गोटे domain name example of search engine google हे परिबो ठीक अछि example of an email service gmail हे परिबो outlook हे परिबो what is CC होची कार्बन कॉपी what is the secure version of HTTPS what does DNS do convert domain name to IP address where are received
email stored inbox रे ओके देन आसीबा हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी कोन कंप्यूटर सिक्योरिटी refers to protecting computer system and data from unauthorized access, theft, damage or misuse आपनकर कंप्यूटर सिक्योरिटी कोन कोन रहिछि साइबर सिक्योरिटी रहिछि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रहिछि एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो सिक्योरिटी रहिछि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी मुख्यतः गोटे होछि कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मन रखंतु इट मींस कंप्यूटर सिक्योरिटी रो काम होछि आपनकर अनऑथराइज्ड डाटा को प्रिवेंट करेबो इंटीग्रिटी रखिबो दैट इज एंश्योर करिबो डाटा इज एक्यूरेट okay and availability ensure data and resource are accessible to authorized user that is using confidentiality integrity and availability okay then देखंतु आपनकर कॉमन टाइप ऑफ किछि सिक्योरिटी थ्रेट्स रहिछि virus a program that infect file or spread हिजो जोटा आपन virus जेमति worm self replicate गोटे program spread through a network then असला आपन trojan horse गोटे virus ठीक अछि a malicious program that is then asla spyware ठीक अछि बट वायरस अटे सीक्रेटली गैदर करिवो यूजर इंफॉर्मेशन को then asla ransomware locks data and demands payment करिवो that is ransomware phishing fake emails website to steal a login information that is phishing को आजिवो adware माने show unwanted ads देखेबो rootkit रो वायरस रहिछि hides malicious process from the operating system and keylogger record की strokes to steal password ପାଇଁ keylogger यूज करा जाय that is गोटे वायरस अटंती सिक्योरिटी टूल एंड मेजर्स एंटीवायरस को यूज करा जाय एंटीवायरस जेमिति आपनकर कोन रहउछि क्विक हिल आभास एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रे गोटे बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट एंटीवायरस रहउछि दैट इज विंडोज रे डिफेंडर सेमिति फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक करिवो ब्लॉक करिवो अनऑथराइज्ड एक्सेस एनक्रिप्शन कन्वर्ट डाटा इनटू ए अनरीडेबल फॉर्मेट जेतो सेटा रीडेबल हबो दैट इज डिक्रिप्शन पासवर्ड यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस पय आपण पासवर्ड दे परिबे ठीक अछि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाको जे आपनकर ओटीपी आसे ठीक अछि टू स्टेप वेरिफिकेशन मध्ये का जे डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट पय डिजिटल सिग्नेचर यूज करा जे बैकअप आपण यूज करन कीप कॉपी ऑफ इंपोर्टेंट डाटा जहां भी किछि आपनकर एसेंशियल डाटा रहउछि तार आपण फाइल को बैकअप रे मध्ये रखंती सिक्योरिटी पैच सॉफ्टवेयर अपडेट टू फिक्स vulnerability ठीक है सिक्योरिटी पैच द्वारा आपण जे कोन से गोटे सॉफ्टवेयर कि एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करंती एंड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फेस आईडी और एक्सेस कंट्रोल पई बायोमेट्रिक यूज करा जाय देन असला आपनकर टाइप ऑफ सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटी ओके फिजिकल सिक्योरिटी हार्डवेयर रे नेटवर्क ता आपनकर कोन करिवो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन समय रे सॉफ्टवेयर जे आपनकर प्रोग्राम को आपण यूज करछन्ती दैट इज केमिति टेम्परेट हबो नै ता पय यूज करा जाय ईमेल फिशिंग स्पैम एंड मालवेयर जरिया रे आपण कोन करि परिवो ईमेल सिक्योरिटी दिया जाय एंड डाटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस पय ओके देन असला आपनकर देखंतु साइबर सिक्योरिटी जे आपण जीरो डे रे सबटु बड़ गोटे थ्रेट वी कैन से यूज स्ट्रांग एंड यूनिक पासवर्ड गोटे साइबर सिक्योरिटी पई स्ट्रांग एंड यूनिक पासवर्ड डोंट क्लिक सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट को जोटा आपण जानि नांती ओके कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखंतु लाइसेंस्ड एंटीवायरस एंड फायरवॉल यूज करंतु कोनोसी भी मोड किबा स्पैमिंग एप्लीकेशन यूज करंतु नाही अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करिया समय रे कोनोसी पब्लिक वाईफाई यूज करंतु नाही always log out from public and share the device okay that is cyber security माने cyber security द्वारा आपण कोन हे परिबे प्रोटेक्टेड रहि परिबे देन किछि असला आपनकर कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स मालवेयर गोटे malicious सॉफ्टवेयर जेंति वायरस वर्म etc हैकिंग रो काम कोन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम साइबर क्राइम तो होछि आपण जानचंती क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्यूटर spam unwanted email message firewall जानिले barrier between trusted and untrusted network भितरे encryption जानिले डाटा जहा अपन कोन रीडेबल फॉर्मेट रु अनरीडेबल फॉर्मेट रे आसीबो डिजिटल सिग्नेचर जरिया रे वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट और सेंडर दैट इज बट ऑथेंटिकेशन पय यूज करा जाय डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर नो सर्टिफिकेट पय ओके
नेक्स्ट आपनकर आसला फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसे देखंतु व्हाट डज फायरवेल डू परीक्षा जदि प्रश्न आसीबो ब्लॉक करिवो अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को व्हाट इज वायरस ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट फाइल्स व्हाट इज फिशिंग fraud to steal personal data via fake links what is ransomware malware that locks the data and demand ransom माने किछ आपन पेमेंट से डिमांड करिवो what is spyware tracks user activity secretly which tool detects and remove malware that is antivirus full form of OTP kono one time password अटे what is encryption used for securing data by encryption use करा जाए what is 2FA two factor authentication what is the safety type password ओके आपनकर पासवर्ड टा केते बेले सेफ्टी ही परिबो सेथिरे लेटर रहिबो नंबर रहिबो सिंबल जाको स्पेशल कैरेक्टर रहिबो देन आपनकर पासवर्ड टा सेफ्टी ही परिबो ओके देन हमें लास्ट पार्ट रे किसी कंप्यूटर रो इंपोर्टेंट एब्रिविएशन को डिस्कशन करिबा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस CPU रो फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट RAM हेउची रैंडम एक्सेस मेमोरी ROM हेउची रीड ओनली मेमोरी एटा आपनकर वोलाटाइल दैट इज नॉन वोलाटाइल डाटा को रिटेन करि परिबो नाही डाटा को रिटेन करिवो USB होची यूनिवर्सल सीरियल बस HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर पर्पस रे परिहरा से एस स्टैंड्स फॉर URL होची यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर IP होची इंटरनेट प्रोटोकॉल ISP होची इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मन रखंतु नेक्स्ट LAN होची आपनकर लोकल एरिया नेटवर्क WAN होची वाइड एरिया नेटवर्क MAN होची मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क Wi-Fi वायरलेस फिडिलिटी OS होची ऑपरेटिंग सिस्टम GUI होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस CLI होची कमांड लाइन इंटरफेस PDF रो फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यार बैकग्राउंड रहबो नै यार बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंट रहबो यार बैकग्राउंड रहबो CD होची कंपैक्ट डिस्क DVD होची डिजिटल वर्सटाइल डिस्क SSD होची आपनकर सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD होची हार्ड डिस्क ड्राइव BIOS होची आपनकर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम URL तो जानिले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 IMAP होची इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल DNS होची डोमेन नेम सिस्टम OTP होची वन टाइम पासवर्ड AI होची आपनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन असला IoT होची इंटरनेट ऑफ थिंग्स मन रखंतु DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज गोटे वेब पेज को क्रिएट करिया पई HTML लैंग्वेज को यूज करा जाय www वर्ल्ड वाइड वेब ओके आज रो क्लास रे हम किछि इंपोर्टेंट कंप्यूटर रो चैप्टर को डिस्कशन करचंती आई होप एई क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो क्लास टी को लाइक करंतु एंड बहु मात्रा रे शेयर करंतु आपण हेरो PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास